सबको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आई होप समझ में आ रहा है, एंड आई होप लेक्चर 3 के क्वेश्चंस हो गए थे। और कौन सा पूछ रहा है? लेक्चर 3 क्वेश्चन 9। लेक्चर 3 कौन सा क्वेश्चन है मुझे याद नहीं है, मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो ना जरा। Okay, so just one question before we start with the है, ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन 9 तो सीधा फॉर्मूला लगाना है बच्चा, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, सीधा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा, सीधा लगा दो। 11 में भी कोई ऐसा ज़्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है भाई? Are you not following the procedure that I have taught you? Is there confusion in the procedure? If you have a knot and M1, M2, then you will say that the tension here is T and the tension here is 2T, and you will say that the acceleration is A naught, acceleration is A1, acceleration is A2, and then you simply write down the equations. 2T 2T is equal to M naught A naught, T minus M1G is equal to M1 A1, T minus M2G is equal to M2 A2, and then simply the dot product of these vectors, dot product of tension and acceleration. Where is the confusion? What is the why can't you find the constraint equation? Right? Why can't you find the constraint equation? मैंने आपको बताया ना क्या होता है constraint equation. Summation of the dot product of tension and acceleration is equal to 0. So 2Ta naught plus Ta1 plus Ta2 is equal to 0. A1 is equal to half A naught. How did you arrive at this? I mean, what is the logic behind this? मेरे को नहीं समझ में आ रहा. I'm sorry. Is it like आपके मन में आया और आपने बोल दिया? क्यों बात? वो जैसे अपने याद है महाभारत में एक कैरेक्टर थे संजय, उनको दिव्य दृष्टि थी. जब तक बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, जब तक एक या दो स्ट्रिंग्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं है
तब आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे कैसे कर सकते हो? सर इसमें अगर m1 का एक्सेलरेशन a2 लिया और m2 का डाउनवर्ड्स में a2 लिया और उसमें से a0 सब्ट्रैक्ट कर दिया ऊपर नहीं नीचे, नहीं, और कर सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन लेके कर सकते हैं, बट you will be creating a mess sort of thing. तो सर मतलब थोड़ा मेसी हो जाएगा और कुछ नहीं है। ऊपर नीचे प्लस कहाँ करना है, माइनस कहाँ करना है। और अगर मैंने ऐसा क्वेश्चन ले दिया तब, if I give you a question like this and you make it a question like this, अब in fact I want जो मैं क्वेश्चन करवाने वाला था उसमें तो ऐसे है, m पुली m पुली m, and this goes on till infinity. So you have to find the acceleration of the first m. अब इसमें क्या करेंगे, a1 माइनस a2 माइनस करते जाएंगे। इसमें रिलेटिव नहीं लग पाएगा। हाँ, so the problem is that we have to remember these things in such a way that we can do these questions even after 6 months with minimum type of revision. Okay, so that is why it is always better to have a fixed sort of steps which will, and this is not applicable for every class of questions. So this is one class of questions where you have a fixed algorithm कि हाँ भाई ये ऐसा method लगा दो solve हो जाएगा. So it is always better to do. Of course you can do it other ways. HC वर्मा में आप देखो तो एक और दूसरा मेथड दिया हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा. But I find that this is the fastest and this is the, and it is question independent. जो मेथड मैंने आपको बताया है वो आप लगाओ इस पे, इन्फिनिटी वाले पुली वाले प्रॉब्लम पे. प्लीज सॉल्व दिस. प्लीज सॉल्व दिस पुली वाला प्रॉब्लम. आई वांट टू सॉल्व दिस फर्स्ट. फिर ए नॉट की वैल्यू इसमें क्या आएगा, ए नॉट की वैल्यू इसमें आएगा 2 into a naught, which is 2t by m naught, plus a1, which is t by m1 minus g, plus a2, which is t by m2 minus g, and this is all equal to 0. So I will get t by m naught into 2 plus 2, 4 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 4 plus 2, 6 आ जाएगा. Four plus 2 is equal to 2g. So t is equal to, oh sorry, क्या कर रहा हूँ मैं, सुबह सुबह दिमाग खराब हो गया. t 4 by m naught minus minus plus, sorry, plus 1 by m1 plus 1 by m2 is equal to 2g. So t is equal to 2g divided by 4 by m naught plus 1 by m1 plus 1 by m2, right? और उसके बाद से इसमें सारी वैल्यूज आप डाल दोगे, you will get the value of t, और
टी आ गया तो ये अच्छा क्वेश्चन है. So the question is, we have pulley which is connected to a pulley string, and we have a 4 kg block here, and we have 5 kg block here. एक स्ट्रिंग में टेंशन T लिखना है, यहाँ पे टेंशन T हो गया, यहाँ पे टेंशन T हो गया, यहाँ पे टेंशन T हो गया, यहाँ पे टेंशन 2T हो गया. इसका एक्सेलरेशन A1 हो गया, इसका एक्सेलरेशन A2 हो गया. तो 2T minus 5G is equal to 5A1, T minus 4G is equal to 4A2, 2TA1 plus TA2 is equal to 0. T और T कैंसिल हो गया. मेरे पास आया 2A1 plus A2 is equal to 0. A1 की वैल्यू कितनी है? 2T by 5 minus G. A2 की वैल्यू कितनी है? T by 4 minus G is equal to 0. T 4 by 5 plus 1 by 4 is equal to 3G. 4 by 5 plus 1 by 4 कितना आएगा? कुछ गड़बड़ किया गया. 2T by 5. आया ना समझ में? अभी यहाँ से T का वैल्यू निकाल लो और ये T का वैल्यू वापस डाल दो. ये A1 का एक्सप्रेशन है, ये A2 का एक्सप्रेशन. 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल लेने पर भी आंसर सेम आ रहा है. तो आंसर गलत दिया होगा जहाँ भी है. हाँ तो 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डबल तो है ही है ना, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना. Acceleration of 2 is twice acceleration of 1. Acceleration of block 2 is twice acceleration of block 1. हाँ ये वाला किया किसी ने सॉल्व? नाइन किसने पूछा था? 9 और 9 वाला नहीं हुआ तुझसे? मुझे 20G/7 आ रहा है क्या? नहीं 20G/7 गलत है. 20G/7 कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा T
21 by 20 is equal to 3G. तो T is equal to टेंशन आ रहा है ना 20G/7. टेंशन तो आ ही सकता है 20G/7. एक्सेलरेशन नहीं आ सकता. 20G/7 यहाँ पे वापस डाल दो. 2G/7 आ रहा है ना. कौन सा A1 या A2? A1 is equal to 2T/5 minus G. 2T/5 ये आ जाएगा 8G/7 minus G. 8G/7 minus G. ये कितना आएगा? G/7 पॉजिटिव और A2 आएगा 2G/7. नेगेटिव आ रहा है ना. A2 नेगेटिव है. G से ज्यादा एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है प्रसन्न. सोनल -2G/7 है ना. माइनस होना चाहिए. नहीं, ऐसे नहीं याद रखते हैं पार्थ. टेंशन डबल हुआ तो एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा. तो जनरली वही आता है, लेकिन हर क्वेश्चन में वैसा नहीं आया. ट्रिक नहीं है भाई ये. प्रतीक्षा, इट इज नॉट अ ट्रिक. This is a method which is known as the virtual work method. This is the equation that you get. It's called a virtual work method. Yeah, so let me show you how it works. This is called Feynman's Pulley problem. Supposed to be very daunting. हाँ, जो लास्ट क्लास में एक्सेशन का पैटर्न मैंने बताया था, दैट वाज सपोज्ड टू बी फॉर अ वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ सिचुएशंस, राइट? तो बेसिकली if you are getting something like this, ये let's say मास m0 है और इधर पे ये मास m1 है, m2 है और यहाँ पे ये मास m1 है. अब आपको बोला किसी ने एक्सेलरेशन निकालो, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि इन तीनों का एक्सेलरेशन सेम होना है. ये ऑब्वियस इसलिए है क्योंकि m1 और m0 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं ऐसे, और m0 और m2 एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ऐसे. There is a direct connection between the masses, between the blocks. So if m1 moves down by a distance of x, it is guaranteed that m0 has to move left by a distance x. And if m0 moves left by a distance x, then it is guaranteed that m2 will move up by a distance x, right? So if this is true, if this is the question, then what I can say is that the acceleration must be डिनोमिनेटर में आएगा m1 plus m2 plus m3 और न्यूमरेटर में आएगा, सपोजिंग m1 नीचे जा रहा है तो न्यूमरेटर में आएगा m1g minus m2g, क्योंकि m0 का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो जीरो होएगा बिकॉज m0 is moving horizontally, right? So this will be the acceleration of the system. I have worked it out in one step. अब अगर मेरे को ये प्रॉब्लम आ जाए जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था, ये एंगल थीटा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, it is connected to another block going over a pulley, and it is connected to yet another block going over another pulley. So let's say this is m1, this is m2, this is m3,
and let's say that M3 is the heaviest, or in the problem, it does not really matter. You just put everything in the expression, and if you get a negative sign, that means your whatever you have assumed the direction of acceleration to be, it is wrong. The direction is the other way around. So it does not really matter कि कौन आप नीचे assume कर रहे हो, कौन ऊपर assume कर रहे हो. Consistency होनी चाहिए. इसका मतलब कि M3 नीचे जा रहा है और M2 ऊपर जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए. Right? तो इस केस में अगर M3 नीचे जा रहा है तो हमारा एक्सेलरेशन होएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, और ऊपर आ जाएगा M3 नीचे जा रहा है तो इट विल बी M3G माइनस प्लस M2 साइन थीटा G, और M1 ऊपर आ रहा होगा तो माइनस M1. ये वेरी स्मॉल सबसेट ऑफ सिचुएशंस में ये पैटर्न हमारे लिए वर्क करता है, राइट. लेकिन द मोमेंट यू आर गेटिंग मल्टीपल strings, multiple pulleys, not directly connected to each other like we have here, or you can say that the moment you are getting movable pulleys, right, pulley movable हो गई तो फिर ये काम नहीं करेगा. कोई फर्क नहीं पड़ता है विश्वजीत, कोई डायरेक्शन पॉजिटिव ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, आया समझ में? आपका सर ऊपर है, पैर नीचे है. मैं ये भी बोल सकता हूँ आपका सर नीचे है, पैर ऊपर है. मैं उल्टा उल्टा डायरेक्शन लिया हुआ है. इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट मैटर. ओके, सो लेट मी शो यू हाउ टू डू दिस वन. वेरी गुड, एक्सीलेंट तरुण, बहुत बढ़िया. अबे हार्दिक देख के यार, मतलब क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. जहाँ पे डायरेक्ट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है वहाँ एक्सप्रेशन सेम रहेगा, जहाँ नहीं है वहाँ नहीं रहेगा. ये ब्लॉक और ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये और ये. विश्वजीत, हार्दिक सॉरी, विश्वजीत, तो इन दोनों का एक्सप्रेशन सेम नहीं होगा. एक रस्सी से कनेक्टेड होते तो एक्सप्रेशन सेम होता. G/2, yes, very good, excellent. Yes, yes, Abhijit, good, excellent, yes, yes. So you are solving Feynman's problem, which is a very notorious problem. Let's say that the tension here is T, tension here will be T/2, tension here will be T/4, and so on. Let the acceleration of this be A1. This is what we want to find out. A2. Let the acceleration of this be A3. Right? Then what do we get? What are the equations we get? We get T minus mg is equal to ma1, and then we get T/2 minus mg is equal to ma2. Then we get T/4 minus mg is equal to ma3, and we get an infinite equations. And then we want the constraint equation. Dot product of these two guys, dot product of these two guys, dot product of these two guys, and add them together to give 0. So we get TA1 plus good mag, yes, and then we get T/2A2, T/4A3, infinite sums, infinite terms is equal to 0. तो इसमें t कैंसिल आउट हो जाएगा, t तो कॉमन है. तो आई विल गेट A1 plus A2/2 plus A3/4 infinite terms is equal to 0. A1 की क्या वैल्यू है? A1 की वैल्यू है T/m minus g plus half. A2 की क्या वैल्यू है?
A2 की वैल्यू है, हाँ पाथ, वेरी गुड, A2 की वैल्यू है T/2m-g, A3 की क्या वैल्यू है, यहाँ पे बाहर मुझे लिखना पड़ेगा पहले 1/4, A3 की क्या वैल्यू है T/4-g, and so on. This will add up to 0. अब T/m में अलग लिख दे रहा हूँ, T/m में क्या आएगा 1 + 1/4 + 1/4 स्क्वायर अप टिल इंफिनिटी माइनस या इज इक्वल टू g लिख दे रहा हूँ, g के साथ क्या आएगा 1 + 1/2 + 1/4 अप टिल इंफिनिटी, और सबने ये किया हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, राइट। अगर आपने नहीं किया है डज नॉट मैटर, ये आपको मैथ्स में वैसे भी करवाया जाएगा। इफ यू हैव नॉट डन इट डज नॉट मैटर, of course if you have not done it then you will not be able to solve this particular question, but as far as long as you have written up till this point I am happy, यहाँ तक अगर आपने लिखा है I am happy. So for the T/m wali series, the sum by the way of a infinite GP is the first term upon 1 minus the ratio, okay, 1 minus ratio. A3 की वैल्यू निकाल लो ना भाई, यहाँ ये इक्वेशन सामने है, इसमें m से डिवाइड करो, A3 का वैल्यू आ जाएगा। कोई ऐसा मिस्टीरियस चीज मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ। So T/m into the first term, which is 1 upon 1 minus the common ratio is 1/4, is equal to g, and again first term is 1 minus 1 upon 1 minus common ratio, which is half. So I'll get T/m into क्या आएगा यहाँ पे 4/3 is equal to 2g, right? So T is equal to 3mg by 2, and therefore A1 will be equal to g by 2. Right? Not only can you find A1, you can actually find every acceleration, and you will see that it is only the first block which will go up. बाकी सारे blocks they will be coming down. Infinite series of pulleys, right? अभी किसी को डाउट है, किसी को? So the steps are very very simple. Number 1, string में tension, लेफ्ट साइड के सेकंड स्टेप में, लेफ्ट साइड के सेकंड स्टेप में है। अरे टेंशन T/4 है ना थर्ड वाले में। अगर यहाँ पे टेंशन T/2 है, यहाँ पे टेंशन अगर T/2 है तो यहाँ पे भी T/2 होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टेंशन? T/4 हो जाएगा ना। So the first step is to designate tension. How can you do this? You can take the tension of any string to be T, any string that you choose. Here I have chosen the first string, the tension to be T. You can choose this guy to be T, no problems. If you choose this guy to be T, then here the tension will be 2T and here the tension will be T/2. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैलकुलेट करके देखिए, सब सेम आने वाला है। मैंने यहाँ पे टेंशन T लिया, और ये जो पुली है इसके ऊपर नेट फोर्स 0 रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे टेंशन T ऊपर लगा हुआ है और यहाँ पे दोनों टेंशन बराबर होने चाहिए, तो the tension in this string must be T/2. This string must be T/2. So the second mass experiences a tension of T/2. Again, for this pulley,
the tension here is T by 2, so the tension here must be T by 4, क्योंकि ये tension plus ये tension must be equal to ये tension, and so on and so on and so on. First step is done. Second step, designate accelerations. Now vertical masses जहाँ पे हैं ऊपर कर दो, horizontal masses जहाँ पे हैं right में कर दो. Acceleration A1, A2, A3, A4. किसी का acceleration same नहीं assume करना. उसके बाद से write down the second law equations for all the blocks. उसके बाद से write the constraint equation. It should not be a problem because you will find that the arrows that you have drawn of tension and acceleration, of tension and acceleration, of tension and acceleration are in the same direction. So two vectors which are in the same direction have a dot product which is magnitude of one multiplied by magnitude of the other into cosine 0. Cosine 0 is 1. So the dot product is really normal product. So I multiply tension and acceleration for the blocks, I add them up and I equate them to 0. This of course will ensure that T cancels out. And if T cancels out, you are going to end up with a relationship between the acceleration of the masses, right? Now, once you have this relationship between the acceleration of the masses, then simply place the values of acceleration from the second law equations into this equation, and that should give you the value of tension. Once you have found the value of tension, you should be able to find the acceleration of the individual blocks. And if you get an acceleration which is negative, this simply means that your assumed direction of going up is wrong, and that particular block for which you are getting acceleration as negative must be coming down. This may give rise to non-intuitive results. Right? This may give rise to non-intuitive results. For example, here, I am getting A2 as minus 2g by 7. I am getting A1 as plus 2g by 7. This means that the 5 kilogram block will be going up and the 4 kilogram block will be going down, right? So the 4 kilogram block, for all intents and purposes, is actually pulling the 5 kilogram block up, right? This should not be mysterious to us. Should not be mysterious to us, because यहाँ पे tension T है और यहाँ पे tension 2T है. तो जो upward force 5 kg block पे लगा है is double the upward force applied by the string on the 4 kg block, and therefore 5 kg block ऊपर जा रहा है और 4 kg block नीचे आ रहा है. So one last question I would like to give all of you, please do this. हाँ, एक बार जब इक्वेशन आ जाए तो फिर कुछ भी कर सकते हैं. चलो, ये सारे आपको मैंने शायद एक्सरसाइज में दिए हुए हैं. Okay, so we have, let's say that सारी इक्वली कर देते हैं. So these blocks are n minus 2 in number.
So the total number of blocks that you have is n, जिसमें कि दो ब्लॉक्स जो है वो एंड पे हैं, ये रहे और ये रहे, दिस गाय एंड दिस गाय, और बाकी के n-2 ब्लॉक्स यहाँ पे हैं, बाकी के n-2 ब्लॉक्स ये रहे। बेसिकली ये डॉट 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 बता रहा है कि कई सारी पुलीज हैं बीच में जो मैंने ड्रॉ नहीं करी। कैन यू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स? कैन यू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सुनना, और मैं क्या पूछूंगा, ब्लॉक का नाम थोड़ा पूछूंगा। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। मतलब हार्दिक, तेरे को दिव्य दृष्टि आई फिर से। इसमें ये बोल सकते हैं कि जो n-2 ब्लॉक्स हैं उनका सेम रहेगा। अबे एक्सेलरेशन निकालना है जोहेब यार, और क्या निकालना है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ये जो n-2 ब्लॉक्स हैं इनका एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि इनके साथ सेम सिचुएशन है, और जो साइड वाले दो ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन सेम रहेगा क्योंकि वो सिमेट्रिकल, वो बिल्कुल सेम सिचुएशन है। बहुत बढ़िया हार्दिक, गुड। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। n के टर्म्स में आना चाहिए ना, n नहीं जाएगा ना वहाँ, n कहाँ गायब हो जाएगा?
अगर यहाँ पे मैंने टेंशन T अज्यूम किया, यहाँ पे टेंशन 2T हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रिंग है. दिस इज ए सिंगल स्ट्रिंग, ह्यूज सिंगल स्ट्रिंग, राइट. तो इसमें थ्रू आउट टेंशन सेम रहना चाहिए. What is the equation that I will write for the side वाले blocks? I will write T minus mg is equal to ma1. So I am assuming कि इसका acceleration a1 है, इसका acceleration a2 है, इसका भी a2 होना चाहिए, इसका भी a2 होना चाहिए, और इसका a1 होना चाहिए. Part I am more interested in positive कौन सा होगा. T minus mg is equal to ma1 आ गया, और जो नीचे वाले ब्लॉक्स हैं उनके लिए आ जाएगा 2t minus mg is equal to ma2. Right now, please see carefully the constraint equation. The constraint equation must contain n terms. नहीं प्रतीक्षा, माइनस जी नहीं हो सकता है. माइनस जी का मतलब ये हुआ कि टेंशन की वैल्यू 0 हो गई. अगर आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक जी आ रहा है या जी से ज्यादा आ रहा है, then the answer is wrong. हाँ, good Anish, yes. So I want to write the constraint equation, and the constraint equation will have n terms. जितने ब्लॉक रहेंगे उतने टर्म्स रहेंगे हमारे कंस्ट्रेंट इक्वेशन में. तो I will get TA1 plus 2TA2 plus 2TA2 dot plus 2TA2 plus TA1 is equal to 0. अब यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं दे आर n minus 2 टर्म्स. तो अगर यहाँ से हम टेंशन T को कैंसिल भी कर देते हैं, तब भी मेरे पास जो इक्वेशन आएगा वो आएगा a1 plus n minus 2a2 plus a1 is equal to 0, right? So we will get here 2a1 plus n minus 2a2 is equal to 0, right? अब हम a1 और a2 में वैल्यूज डाल देंगे. नहीं भाभैया, 0 नहीं आएगा. अब हम a1 और a2 में 0 डाल देंगे, सॉरी a1 और a2 के टर्म्स डाल देंगे उसमें. हाँ सर, आपने जहाँ पे n-2 लिखा है, आई थिंक वहाँ पे 2n-4 होना चाहिए, क्योंकि 2n माइनस. एक्सेल हाँ हाँ हाँ, क्योंकि टेंशन 2. तो यहाँ पे 2 आएगा, एक यहाँ पे भी 2 आएगा, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा. तो मेरे पास आया a1. a1 की वैल्यू क्या है भाई? a1 की वैल्यू है t by m minus g प्लस n minus 2 into a2. और a2 की वैल्यू क्या है भाई? a2 की वैल्यू है 2t by m minus g. This is equal to 0. So from here you can find the value of t, and then you can find the value of a. Very good. Yes, Anish. Very good. Yes. तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास आएगा t by m is equal to, कितना आएगा भाई t by m? Somebody tell me. n minus 2 minus 1, n minus 3g आएगा. Right?
हाँ भाई, कोई टी बाई एम की वैल्यू जिन्होंने वर्कआउट कर लिया है, n माइनस 3g अपॉन ट्वाइस, नहीं 2 नहीं आएगा, 2n माइनस 4, n माइनस 1 आएगा ऊपर, और नीचे क्या आएगा? प्लस कैसे आ रहा है पीछे? हाँ ये आना चाहिए, ये टी बाई एम आ गया। अब एन कैंसिल होगा क्या? नहीं, एन कहाँ से कैंसिल होएगा? एन माइनस 2 है ना, एन कहाँ से कैंसिल हो जाएगा? हाउ कैन यू कैंसिल एन फ्रॉम दिस इक्वेशन? नहीं नहीं, एन कहाँ से, एन एन नहीं कैंसिल हो रहा। सो टी बाई एम आ गया, टी बाई एम माइनस जी इज इक्वल टू a1 and 2t by m minus g is equal to a2, right? Now you can find a1 and a2. I am only interested in one answer. मेरे को बस ये जानना है कि a1 नीचे है कि ऊपर है, a2 नीचे है कि ऊपर है। a1 is upwards or downwards, a2 is upwards or downwards. a1 is upwards or downwards and a2 is upwards or downwards. हाँ भाई, जिन्होंने वर्कआउट कर लिया है, प्लीज टेल मी a1 up or down, or is there some sort of कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ, गलत बोल रहा है अभिजीत। Yes, yes. n minus 1g upon 2n minus 3 minus g is equal to n minus 1 minus 2n minus 3 g upon 2n minus 3. ये कितना आएगा? n minus 2n minus n minus 1 minus ये plus 3, 2 minus n upon 2n minus 3 g. Now we know that n is greater than 2, right? मतलब ये तो हमें मालूम है कि n is greater than 2. बिकॉज अगर n लेस देन 2 होएगा तो ये सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। n इज द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स। वर्स्ट केस सिनारियो, एक ब्लॉक इधर है, एक ब्लॉक इधर है, बीच में एक टंगा हुआ है। n इज इक्वल टू 3 तो मिनिमम है। अगर n इज इक्वल टू 3 मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, then this is negative. And if this is negative, then this means that this must be going down. My original assumption is wrong. मैंने assume किया हुआ है कि ये ऊपर जा रहा है, लेकिन a1 की वैल्यू तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब कि नीचे आ रहा है। And if you work out the value of a2, then of course it will come out to be positive. Okay, please work it out and see that it comes out to be positive. Now here is the catch. Here is the weird thing. What if all the m's are 1 kilogram? Okay. What if all the m's, सारे जो masses हैं वो 1 किलोग्राम के masses, and n minus 2 is equal to 10,000. Okay. n minus 2 is equal to 10,000.
So basically we have a system. Where we have a 1 kg block here and a 1 kg block here, and here we have a collection of 10,000 1 kg blocks. So what is the total mass here? ये तो 10,000 kilograms हो जाएगा. ये 1 kilogram है, ये 1 kilogram है. And now my question is कि नीचे कौन आ रहा है, ऊपर कौन जा रहा है? नीचे कौन आ रहा है और ऊपर कौन जा रहा है? नीचे कौन आ रहा है और ऊपर कौन जा रहा है? The 1 kg block on the two sides will go down and the 10,000 kilogram will go up. So essentially using the Atwood machine, so this is also called an Atwood machine. Using this Atwood machine, and if you look at the exercises that I have given you, उसमें और भी complicated और अच्छे Atwood machines दिए हुए हैं. Using this particular Atwood machine, you can use 2 kilograms to lift 10,000 kilograms. Right? आपके पास 2 किलो है एक तरफ, दूसरी तरफ 10,000 किलो है. 2 किलो नीचे जाएगा, 10,000 किलो ऊपर आएगा. So using a combination of pulleys and strings, you can actually lift up a huge amount of mass. Okay? और आपने शायद मूवीज में देखा हो कि रियलिटी में होता है ना, क्यों नहीं होता है भाई? एक मिनट. हाँ बोल. सर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ पुलीज एक्सेलरेशन तो नेग्लिजिबल ही हो जाएगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. इसका नेक्स्ट कौन सा? इसका नेक्स्ट तो है ही नहीं. ये वाला नहीं, वो मैंने मिटा दिया है. दो साइड में ब्लॉक्स है ना. हाँ तो 2 साइड में ब्लॉक्स है ना भाई. 3 तो मिनिमम होने चाहिए ना, 2 साइड में और बीच में एक लटका हुआ. रियल लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट ऐसा नहीं होएगा, बट हाँ हो जाएगा ना. अरे तो फ्रिक्शन होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव नाउ. We are moving ahead. Okay, so I have discussed with you what to do when the direction of acceleration is known, right? For example, another example which is not related to pulleys now. Enough of pulleys we have done. So a very simple question, very simple question. So 2 kg, 4 kg, 6 kilograms. If F is equal to 48 newtons, find the tension in the two strings.
एन फाइंड थोड़ी ना कर सकते हैं भाई प्रसन्ना, यार क्या सवाल पूछ रहा है। आप बताओ ना हार्दिक, इक्विलिब्रियम में है या मूव कर रहा है, क्या लगता है आपको? व्हाट डू यू थिंक? No other information is given. You have to decide. अरे उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो लिखा है क्या फाइंड करना है, देखना। सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? क्या हो गया है तुम लोग को भाई? ये आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे टेंशन विल बी T2 लेट्स से, यहाँ पे टेंशन विल बी T1. What will be the value of T1 and T2? Okay, so the way to handle this, the way to handle this is to realize that अगर इसका एक्सेलरेशन a होएगा तो इसका भी a होएगा और इसका भी a होएगा। आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेलरेशन सबके सेम होंगे। अगर एक्सेलरेशन सेम नहीं हुए तो ये जो स्ट्रिंग्स हैं ये या तो ब्रेक हो जाएंगी या फिर स्लैक हो जाएंगी, एंड दोनों चीजें आर नॉट अलाउड इन फिजिक्स, राइट? एटलीस्ट इन द फिजिक्स दैट वी आर स्टडीइंग। सो द स्ट्रिंग्स मस्ट ऑलवेज बी taut and they must be
inextensible. Therefore, the acceleration of the three blocks will be same. So for the first block, I will write F minus T1 is equal to mass into acceleration. For the second block, I must write T1 minus T2 is equal to mass into acceleration. For the third block, I will write T2 is equal to mass into acceleration. Now, if you look carefully, if I add all the three equations, तो T1 cancel हो जाएगा, T2 cancel हो जाएगा. So if I add all the three equations, I will get F is equal to 12A. And this implies that A is equal to F upon 12, which is equal to 4 meter per second square. Right? अब अगर A का वैल्यू आ गया तो सब कुछ आ गया. तो putting the value of A in equation 1. Okay, so putting this value in the first equation, what will I get? 48 minus T1 is equal to 2 into 4. So T1 is equal to 48 minus 8, which is equal to 40 newtons. And T2 is equal to 6A, which is 6 into 4, is equal to 24 newtons. ठीक है? ये आया सबको समझ में? सबको समझ में आ रहा है ये? Okay. Next question. Look at the 4 kg block. What are the forces acting on the 4 kg block? बताओ 4 kg ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? T1 किस तरफ है, T2 किस तरफ है? T1 is, so therefore the net force on the 4 kg block will be, है ना? Okay. चल, question number 3 or 4, I don't remember what it is. हाँ सही बोला विश्वजीत, गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी. तो अगर ये ट्रेन का इंजन है और ये गार्ड का, जो पीछे गार्ड का वो रहता है, लास्ट कंपार्टमेंट है, तो इंजन चलेगा, गार्ड का कंपार्टमेंट चलेगा, लेकिन बीच वाले कंपार्टमेंट स्टेशनरी रहेंगे. नहीं विश्वजीत, ऐसे ही होता है ना ट्रेन में. तो अपन हरगर स्टेशन से अगर चलेंगे, सोच तो क्या बोल रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. This is again continuing with we know the direction of motion, but now strings and pulleys are not, strings may be there, but I'm not going to draw a lot of pulleys. Question number 4. है ट्रेन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, मुझे तो मालूम ही नहीं था. वाह, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना निकला है? 4 है ना?
4 इसके लिए भी है, 4 इसके लिए भी है, 4 इसके लिए भी है। 4 कांस्टेंट ही होता है उत्कर्ष, मेरे को जहां तक याद है। 4 वेरिएबल तो नहीं होता है। 4 ही बोल रहा है ना। नंबर 4, तेरे पास 4 पेन हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ पेन नहीं हुए ना, कांस्टेंट नंबर ऑफ पेन हुए ना। ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट ही है ना। why are you getting confused? There is nothing to get confused about. मेरे को एक प्रॉब्लम दिया गया जहाँ पे 3 ब्लॉक्स हैं और तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं with a string, so they must have the same acceleration, right? And furthermore, this acceleration should be along the x-axis, and furthermore this acceleration should be along the positive x-axis because that is where the external force is. Huh. So we want to find now okay, so we have an inclined plane के ऊपर एक ब्लॉक रखा है and the inclined plane is accelerated. It is accelerated as shown. We have to find that particular value of A for which this block will remain stationary with respect to the inclined plane, right? Okay. So what does this mean? अगर मैंने inclined plane को stop कर दिया तो ये ब्लॉक क्या करेगा? If I stop this inclined plane, what will happen? If I have the acceleration value as 0, if A is equal to 0, then what will happen? The block will slide down. Okay, the block will slide down. If I have the acceleration value very large, अगर ये acceleration की value very large है, बहुत large, आप सबने experience किया है ना, जब बस आगे बढ़ती है या ट्रेन आगे बढ़ती है, then you experience a force in the backward direction, right? So imagine yourself to be sitting on this train. Consider this to be a train. And what would happen if the acceleration is very large? Well, if the acceleration is very large, then the block would go up the inclined plane. So we want to find that particular value of acceleration of the inclined plane such that the block, which is shown in the diagram, does not move with respect to the inclined plane. Does not move
with respect to the incline. नहीं, nothing else is given. Very good, Pratiksha. Very good. बहुत बढ़िया. Good. नहीं, नेगेटिव नहीं आ सकता है. नेगेटिव का थोड़ा कोई मतलब है. जब हम अग्री कर रहे हैं उसका एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 रहेगा तो ब्लॉक स्लाइड डाउन कर जाएगा. अगर एक्सेलरेशन उल्टा कर दिया तो डेफिनेटली स्लाइड डाउन कर जाएगा. महक, ये जो आपने आंसर दिया ना, इसका एक बार वो देखो, यूनिट्स गलत होएगा. अनीश, यूनिट्स गलत. What you have told me is force. You have not told me the acceleration. Mass of incline given नहीं है, इसलिए हम उसको आंसर में नहीं दे सकते. अनीश उल्टा किया मैंने, नहीं, गलत है. तो सबसे अच्छा, मेरे को आप ये क्वेश्चन का आंसर दो. अगर इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन a है and it is given that the block is not moving with respect to the incline, okay, then what is the acceleration of the block? Please try to understand my question. If it is given that the acceleration of the inclined plane is a and the block is stationary with respect to the inclined plane, then what is the acceleration of the block? Very good, Radhika. Yes. नहीं. हाँ, हाँ निश, आंसर सही है तेरा. मेरा क्वेश्चन आया सबको समझ में? अगर इंक्लाइंड प्लेन का एक्सेलरेशन a है और ब्लॉक का एक्सेलरेशन कुछ नहीं है with respect to the inclined plane, then what is the acceleration of the block? Okay, you can always rephrase this question in your mind. You can always rephrase this question in your mind, and you can always say that एक ट्रेन के कंपार्टमेंट का एक्सेलरेशन a है, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा है, उसका एक्सेलरेशन ट्रेन के रिस्पेक्ट में 0 है, तो मेरे को उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है? ट्रेन का एक्सेलरेशन a है, ओके, ट्रेन का एक्सेलरेशन a है, उसके अंदर एक ब्लॉक रखा है, वो ब्लॉक ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है. मेरे को बाहर खड़े हुए मेरे को ऑब्जर्वर को उस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा? There should be absolutely no confusion in anybody's mind. आप स्टेशन पे खड़े हो, सामने से ट्रेन एक्सेलरेशन a से जा रही है, उसके अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, तो उस बंदे का एक्सेलरेशन आपको क्या दिखाई देगा? It will be a. It cannot be anything else.
If it is anything else, then that person will either be not moving with the train or falling out of the train or climbing the top of the train or something very weird. Okay, it will not be any different from the acceleration of the train. Okay, so for all practical purposes, this block which is kept on top of the incline is the same as the block is kept in a train, right? Now you may ask me, अरे ये कैसे होगी? तो इसका बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ये रहा ट्रेन का कंपार्टमेंट, अगर ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है और इसके अंदर एक आदमी स्टेशनरी है, तो इस आदमी का एक्सेलरेशन भी आपको ए दिखाई देगा। अगर ये आदमी इस ट्रेन के अंदर अब एक्सेलरेशन ए नॉट से दौड़ने लग जाए, तो इस आदमी का एक्सेलरेशन आपको क्या दिखाई देगा? Observing from outside, what is the acceleration of the person that you will see? The acceleration will be equal to a plus a naught. And if this guy starts to run backwards, then what is the acceleration of the person that you will see? Remember, we are always on the ground. A minus a naught हमको दिखाई देगा, right? Now what this guy does is that through some magic, through some बेवकूफ़ी की हरकत, I'm sure, children का जो स्लाइड होता है, पार्क में जो बच्चों का स्लाइड होता है, वो इसने ट्रेन के अंदर रख दिया और यहाँ पे वो ऐसे बैठ गया है। अब इसका एक्सेलरेशन आपको क्या दिखाई देगा? अगर ये बंदा नीचे स्लाइड कर रहा है with an acceleration a naught, then the acceleration of the person seen by you will be the vector sum of a and a naught. After all, जब आप a plus a naught या a minus a naught बता रहे थे, तो आप vector sum ही तो बता रहे थे मेरे को. In the first case, you were adding up two vectors a and a naught like this. In the second case, you are adding up two vectors a and a naught like this. So this should be no different, right? Now I say that this person does not have any acceleration on the slide. So he is sitting on the slide. He is sitting on the slide and there is no acceleration with respect to the train. What is the acceleration of this person that we will see from outside? हो सकता है सीट टेढ़ी करके बैठा है, क्या मालूम कैसा कौन पागल आदमी है ये, लेकिन हमें इसका एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा? अगर ये ट्रेन के अंदर स्टेशनरी है तो इसका एक्सेलरेशन हमें ए ही दिखाई देगा, right? So therefore, if I know the acceleration of this block, I will draw the free body diagram. The forces acting on this block are normal reaction N and mg, right? Nothing else is acting on the block. Therefore, whatever acceleration you are observing must be due to these two forces. What is the acceleration that you are observing? You are observing a horizontal acceleration A for the block. Therefore, I will take a horizontal vertical axis like this, and I will remember that this angle will be theta. Normal reaction का angle vertical के साथ theta होता है. This component will be n cosine theta, and this component will be n sine theta. Please notice that along the x-axis there is only one force. Therefore, it is guaranteed that along the x-axis you must see acceleration. And you are seeing acceleration. It is equal to a. So along the x-axis, then the equation of motion that we will write is n sine theta is equal to ma. Along the y-axis, there is no acceleration.
Therefore, the equation of motion that we will write is n cos theta minus mg is equal to 0. Right? Which we can write as n cos theta is equal to mg. So let this be equation number 1, let this be equation number 2. And what would happen if you divide equation number 1 and 2? On the left hand side, you will get tan theta. On the right hand side, you will get a upon g. So a is equal to g tan theta. This is the acceleration for which the block will remain stationary on the inclined plane. This is the acceleration for which the block will remain stationary on the inclined plane. Right? आया समझ में ये? मैंने क्या किया? Remember that Newton's law को अप्लाई कभी भी आप कर रहे हो तो 3 केसेस अराइज होंगे. आपको डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन पक्का मालूम, आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, डायरेक्शन आपको मालूम नहीं, वर्कआउट करना पड़ेगा. तीसरा, आपको एक्सेलरेशन बिल्कुल ही नहीं मालूम है कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं. इस केस में the moment I read that mass m remains stationary with respect to the incline, इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है as that of the incline, तभी with respect to the incline वो stationary. अगर इसका एक्सेलरेशन a horizontal है तो मैंने FBD बनाया और FBD में जो एक्सिस मुझे लेनी है that should be along the direction of acceleration. Therefore, I take the axis along the x-axis and of course the other axis along the y-axis. I draw the forces acting on the object and I resolve the forces acting on the object, and I find that along the x-axis the force is n sine theta. Along the y-axis there are two forces, n cos theta and mg. But the acceleration of the block is along the x-axis and its value is a, same as the acceleration of the incline. So along the x-axis the force must be equal to mass into acceleration. Along the y-axis there is no acceleration, therefore the net force along the y-axis should be equal to 0. And if the net force along the y-axis is equal to 0, then of course I get n cos theta is equal to mg from this equation, and n sine theta is equal to ma from f is equal to ma along the x-axis. And then I simply divide these two equations to get tan theta on the left hand side and a by g on the right hand side. Therefore a must be equal to g tan theta. Now, as I hate saying this, but I have to say this, you have to remember this result. Okay? This result is to be remembered. And the reason is that I may give you, in fact, you will see questions like this, where if you remember this result, it will be very easy for you to do. Right? Very simple to remember. एक इंक्लाइन प्लेन का एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए कि इंक्लाइन प्लेन पे जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टेशनरी रहे इंक्लाइन प्लेन पे? The answer is g tan theta. Okay. Chalo, okay, so we will stop here and we will continue in the next class. किसी को डाउट है कुछ? पार्ट टेस्ट मुझे मालूम नहीं है और होमवर्क में कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं दे रहा, होमवर्क कुछ नहीं. हाँ सर, मुझे बस एक वो एक्सिस लेने में सर एक प्रॉब्लम था सर. जैसे कि अगर मेरे पास दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं
ठीक है, एक ब्लॉक अगर इंक्लाइंड पे एट अ सर्टेन एंगल और दूसरा ब्लॉक सस्पेंडेड है, ठीक है, मतलब मल्टीपल पुली वाला है, एक पुली लगा हुआ दूसरे पुली से भी सस्पेंडेड है, तो सर तो जो इंक्लाइंड तो मैं प्लेन पे है उसके लिए टेढ़ा एक्सिस लेगा और जो नॉर्मल ये जो सस्पेंडेड है उसके लिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेगा। हाँ बस मतलब वही ना, वही था बस सर, मुझे लगा कि उसके लिए भी वही लूं। नहीं नहीं नहीं, आप दो ब्लॉक्स के लिए बिल्कुल अलग एक्सेस ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ओके सर, जी। चलो